Hello everyone, welcome back to the channel. So here we are starting with the analysis video for 24th of September. So Manipur mein internet services they've been restored, and this we are seeing after a ban of 140 days. So after this ban has been lifted, we are seeing कि social media पे वायलेंस जो इनिशियल डेज में वायलेंस देखी गई एथनिक वायलेंस मणिपुर में हमने देखने को मिली उससे रिलेटेड वीडियोस वर बीइंग पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट इवन अनएक्सपेक्टेड एज फार एज द एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न. तो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट completely banning of the internet services, we need to look in again the law and order situation firstly, and obviously internet ban की वजह से भी it is not just then limited to law and order, economy भी impact होती है, but again as this would be varying according to case by case basis. So here we are seeing कि gradual manner में the internet ban is being lifted in the state, and now we are seeing कि law and order situation it is also getting restored. Then US says that it wants to see accountability in the Nijar death case. This is when we're talking about India-Canada relations. And definitely accountability, transparency is important if we want to further strengthen our ties with Canada. So hearing we are having one case study, we can understand this thing in the form of a case study, which can help us in ethics paper, that the PSU engineers who build the equipment for ISRO, they still await their salary. So about 3,000 employees, they have not received their pay for 20 months, forcing them to sell food and garments to make a living. So heavy engineering cooperation, again, including technicians, engineers who helped in producing many pieces of equipment for the ISRO, including the launch pad for Chandrayaan 3, they are now forced to sell the food and garments to make a living. So again, the hard work that they've put in, or the time that they have put in, the skills that again they have utilized, or it has helped the ISRO even in Chandrayaan 3 mission. So we need to value even the smallest contribution. Here we can't say that somebody has contributed in a big manner or a smaller manner. We need to see again everyone from an equal perspective. So that needs to be valued and recognized, and delay in payment of the salary is something which is not acceptable or which is not even expected from such bodies. And again, overall, it does not send a good signal when we talk about the whole society. So it becomes difficult for them to survive, and that is why they are again forced to sell the street food. So again, this is also one of very interesting news that outfit advocates male nurses in the army to break gender barriers. So herein also we are seeing women officers also getting into the army. They are getting permanent commission. But when we talk about the professions which involve these soft skills, which are again, we feel that these are made for females, or we say female domination. So if we see male nurses in the army, so again, that would also be one of the steps forward to break the gender barriers, and uh, you can say कि we would move towards gender equality, gender justice. So again, we need to break this social stigma कि this profession is made for males or this profession is made for females. So High Court has made an observation कि अगर women officers को हम post कर सकते हैं Siachen में, तो a man can also work in the army's hospital.
So what is IBSA? And again, the meeting it seeks to amplify the global South voice. So abhi jo G20 summit bhi hua tha, again, that was also an important platform, specifically with the inclusion of African Union as a member. So we can say the voice of global South becomes much more strengthened. It would be getting much more weightage and recognition with that. Now, when we talk about IBSA, so a very productive IBSA meeting with the foreign ministers have been held. And we see that our Minister of External Affairs, he's on a visit to United States. He met with the Brazilian, South African counterparts who are part of the IBSA group. So IBSA stands for India, Brazil, and South Africa. So three countries are member of IBSA. So herein, again, the main agenda was how we can strengthen, how we can amplify the demand and the interests of global South. So international humanitarian law, respect for human rights, territorial integrity, and reformed multilateralism, these were also reaffirmed in the document. So anti-terror convention, so the group, it also agreed to push for the adoption of the comprehensive convention on international terrorism at the United Nations and reaffirmed the sole authority of the UN Security Council for imposing these sanctions. And again, UN reforms, the pending UN reforms, this was also again taken up. So these are some of the common areas highlighted. And again, when we talk about the reform of the World Bank, IMF, and regretted that jo developed economies and they had not met their climate finance goal of $100 billion per year by 2020. So these were other important things. So again, now from the perspective of map work, firstly, you need to locate ki Kaubal Gali Mushko Valley कहाँ located है, exact location हमें पता होनी चाहिए, कौन सी again hill range है, mountain range है. So again यहाँ पे जो lakes located हैं वो important हो जाती है. Alpine Lake, it is visible from this Kaubal Gali Pass, which is in the Tulel Valley. So it is in the Kargil's Dras sector, Ladakh. And this was a site of war in 1999 during the Kargil war. And ये है North Kashmir में Gurez Valley, high altitude passes of Gurez Valley in the North Kashmir. They are out of bounds to civilians once they are prone to frequent shellings from Pakistan. So again, as a tourist hotspot, this valley opens up. So promoting sports in the school curriculum, this is again one of the important components of the national education policy as well. And even in specifically promotion of sports in schools, we need to also take into consideration how we can promote the participation of public people with disabilities, the students who are again, when we talk about how we can create an inclusive environment for school education. So Nilgiri Tar is IUCN status is endangered. So Tamil Nadu, Kerala, they are going to work in a collaborative manner to count the endangered Nilgiri Tar in order to again conserve their numbers. So this becomes an example of cooperative federalism also. Two states are coming together in order to count and actually make the picture clear how many numbers do we have the surviving Nilgiri Taj. And this is a picture from Annamalai Tiger Reserve. So again, यहाँ पे जितने भी wildlife sanctuaries located हैं at the junction of these two states and differently, specifically Kerala में, Tamil Nadu, Karnataka इस region में, हमारे लिए again map work perspective से area important हो जाता है. So international
पेज पे वी सी की काराबक रीजन, अगेन नगर्नो काराबक रीजन जो है, दिस इज एन एरिया ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया. सो यहाँ पे भी मैप वर्क बिकम्स इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, व्हाट इज द इशू बिटवीन दीज टू कंट्रीज. So this is important from the perspective of prelims. So when we talk about the draft patent amendment rules, they are undermining. It is believed that they undermine the pre-grant opposition. So Patents Act जो है, it explicitly permits anyone to file a pre-grant opposition. And अब जो न्यू ड्राफ्ट आ रहा है उसमें इट इज सीन कि कहीं ना कहीं इस प्रोविजन को अंडरमाइन किया जा रहा है. So the amendment rules, the maintainability of the persons or the civil society organizations filing the pre-grant oppositions, they will be decided by the controller. So what are the other changes being done? So draft patent amendment rules, they give the controller the power to determine ki kya, again, maintainability of the representation of those filing the pre-grant oppositions. So यहाँ पे we can say कि centralization of powers हमें देखने को मिल रहा है in the amended rules. So currently जो हमारी patent act है वो explicitly permit करती है anyone can file the pre-grant opposition without discretion of the controller. सो यहाँ पे अगेन एवरीथिंग वुड नाउ डिपेंड अपॉन कि कंट्रोलर कैसे डिसीजन लेता है या लेती है. एंड अगेन दिस नीड्स टू बी डन इन एन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. So pharma companies, they are averse to this, the pre-grant opposition, and the draft patent amendment rules help them by making this process difficult. So again, this would be somewhere favorable to the pharma companies. And when we talk about this would be favoring the pharma companies, so again, right now we are focusing upon again the quality of the drugs that we are producing, because of late we have seen certain incidences even at the global level कि जो हमने again pharma products export किए, their quality was compromised, and उसकी वजह से we have seen people and children dying. So this needs to be looked into. ये एक again यहाँ पे dilemma emerge हो जाती है. And there are innumerable instances जहाँ पे the patient groups and the civil society organizations उन्होंने file करी है pre-grant opposition, leading to rejection of the patent extension also. So basically इस provision ने हमें काफी help किया है. तो अब आने वाले time में if we say कि controller के पास power रहेगी in order to decide, so again the basis of decision becomes much more important. So this is one of the major proposed changes in the patent rules. FAQ page pe, why have India-Canada tensions worsened? So this we have covered in detail. We analyzed this topic yesterday. So herein, when we look at ki how did India react to this issue, allegations India ke upar lagaye gaye कि जो again this person died, यहाँ पे India का role था. So specifically this happening after the G20 summit. So again, यहाँ पे the relations, the puller side meeting with the Prime Minister Modi की गई. After the meeting, both the sides, they issued readouts pointing fingers at each other for the foreign interference in Canada's affairs. So these phrases were used, providing safe havens to anti-India extremists respectively. So दोनों again एक दूसरे के ऊपर allegations लगाते हुए दिखाई दिए. And apart from this, so again कोई specific evidence नहीं है कि there was India's role in killing, in the Nijaz killing. And apart from this, so US media ने भी suggest कि यहाँ पे again US का role भी important हो जाता है. US is saying कि Canada shared the evidence with the partners in the Five Eyes intelligence alliance comprising US, UK, Canada, Australia, New Zealand prior to the G20 summit. And the same, some of the leaders, they had discussed the issue with Prime Minister Modi as well. So again, इसके अब हमें repercussions देखने को मिल रहा है बाकी सारे areas में. So India's decision to suspend the visas to the Canadians, it could see reciprocal action or delays even by Canada also.
So reasons for the rise in global. Well, in this topic, I would like to raise one point that yesterday also we had some points on this topic. So actually, in the Indian socio-economic political milieu, we have number of factors because of this reason. But the most priority today is to implement the Indian Extradition Act in 1967 in the full spirit, which provides such kind of measures as just I mentioned that there should be an oath and affirmation on all the individuals who are going outside to these countries that they have to sign that the time they are doing any sort of radicalism against the India, they will be booked under the extradition act and they will be bring back and they will be booked. So I think the government of India should try to implement that in confidence with the Canada government as well as with the other foreign countries. Yes, that is So what कि कनाडा गवर्नमेंट की अगेन जो कोऑपरेशन कोलैबोरेशन चाहिए वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है. इवन व्हेन अगर ये जो केस भी है यहाँ पे कनाडा गवर्नमेंट इज नॉट एक्नॉलेजिंग दैट थिंग कि इंडिया का रोल नहीं है. अगर एविडेंस नहीं है तो इट इज क्लियर कि इंडिया का ऐसा कोई रोल नहीं है. आप एलिगेशंस नहीं लगा सकते हो. तो इवन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्सट्रेडिशन एक्ट, सो देयरइन आल्सो वी वुड बी रिक्वायरिंग द कोलैबोरेशन कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा. सो अगेन ये मेन प्रॉब्लम है. कोई भी हम स्टेप लेंगे तो उनकी कोऑपरेशन हमें चाहिएगी. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एड्रेस. And again, things can become, they can be solved in this manner. sure. All right, so the next topic, this is again one of the important global issues की हम बात जो करते हैं. So this is one of them, that is rise of the global debt. तो उसके पीछे reasons क्या हैं and again आगे क्या solution है. So जो global debt है, that is increased to an all-time high of $307 trillion in the second quarter by the end of June 2023, as per the report of Institute of International Finance. So जो global debt है, that is increased by about $100 trillion over the last decade. And again, यहाँ पे decade wise trend है हमारे पास. So it becomes clear कि on the basis of last 10 years, the global debt has been rising. Global debt का as a share of GDP, that has also started to increase once again. And it is reached an all-time high of 336% after dropping quite steeply for 7 consecutive quarters. But now we are seeing कि ये share भी या ये जो ratio है percentage is also increasing. तो global debt firstly होती क्या है? Global debt refers to borrowings of the governments. इसमें private businesses भी included हैं and individuals are also included. So इन सबका total करके हमें figure मिलता है global debt का. So government की जो borrowings है, again they are borrowing to meet their various expenditures that they are unable to meet through the taxation or the revenues, basically through their income. When income is less and again they need to spend more, तो government को borrow करना पड़ता है. तो government borrow कर सकती है again to pay the interest also, जो money उन्होंने पैसे पहले borrow किया था. And the private sector borrows predominantly to make investments. So ये reasons हैं behind borrowing. But अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि increase हो रही है. तो ये समझना important हो जाता है कि increase क्यों हो रही है, कौन से factors हैं, क्या reason है behind this increase. So global debt both nominal terms में भी and again real terms में हम बात करेंगे तो both global debt in normal terms and the global debt as a share of GDP दोनों increase हो रहे हैं steadily over the decade. So keyword is steady increase देखने को मिल रहा है. And this rise came to a halt during pandemic, जब again 2020 की हम बात करें, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी एवरीथिंग इट केम टू अ स्टैंड स्टिल, लॉकडाउन लगा दिया गया. तो उस टाइम पे अगेन बोरो करने का कोई मतलब नहीं बचा. तो उस टाइम पे अगेन वी सॉ कि जो फिगर्स थी वो एक पॉइंट पे आके रुक गई. बट जो ग्लोबल डेट लेवल्स थे दे हैव अगेन स्टार्टेड टू राइज अगेन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में. एंड वो जो 80% ऑफ द राइज हमें देखने को मिला है ग्लोबल डेट में द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इट हैज कम फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमीज. तो ये भी एक हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है, स्पेसिफिकली कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, जापान एंड फ्रांस. तो वहां पे अगेन वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, कि यूरोजोन इज इट हेडेड टुवर्ड्स अ रिसेशन और नॉट. तो ये भी एक कहीं ना कहीं हमें अच्छा मैसेज सेंड नहीं करता है. एंड जब हम बात करते हैं इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील, सो वहां पे वी हैव सीन मोस्ट ग्रोथ इन दी डेट. वहां पे भी हमें डेट में ग्रोथ देखने को मिली है. तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 जो टोटल ग्लोबल डेट है दैट इज इंक्रीज बाय $10 trillion and this is happened amid the rising interest rate. We are seeing कि advanced economies में again
India maybe we are following tight monetary policy. So this is happening amid rise in the interest rates. So मतलब कि borrowing cost भी increase हो रही है, उसके बाद भी we are seeing कि borrowing activity increase हुई है, debt increase हुई है, which was expected to adversely affect the demand for loans also. This is the point कि borrowing cost increase होने के बाद भी अगर debt increase हो रही है तो वहां पे भी कुछ मेजर चीज चल रही है. So but a rise in the debt levels over time it is expected, since जो total money supply है it usually steadily rises each year in countries across the globe. And we can say कि rise in the global debt levels witnessed during the first of this year, it is nothing out of the ordinary and it does not per se have to mean trouble for the global economy. तो हम again we can't directly jump to this conclusion also कि ऐसा कोई major problem चल रही है. Again we need to look at other things also. So अगर simple rise भी देखने को मिल रहा है in the total amount of savings in the economy, so that can also cause a rise in the debt levels, as these increased savings they are channeled into investments. So ये भी एक possibility हो सकती है कि savings rate increase हो रहे हैं, and again जब savings को channelize किया जाता है through the banking sector, through the banking network, तो again वहां पे हमें बोरोविंग्स इंक्रीज होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि सेविंग्स को अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है. सो व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज कि जो राइजिंग डेट लेवल्स हैं, दैट इज in the is the drop in the global debt as a share of GDP over 7 consecutive quarters prior to 2023. तो ये भी कहीं ना कहीं एक हमारे लिए पॉजिटिव है कि अभी राइज होने से पहले जो लास्ट के 7 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर के बेसिस पे अगर हम ग्रोथ देखें तो वहां पे हमें फॉल देखने को मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ द जीडीपी. So again जो ये decline देखने को मिल रहा था in terms of the share of GDP, that was because of rise in price inflation, which it claims कि it has helped the governments to inflate away the debts that were denominated in their local currencies. And inflating away the debt, it refers to the phenomena जहाँ पे central bank of a country it either directly या indirectly uses freshly created currency to again repay the outstanding government debt, for example purchasing the government bonds in the market. So ये एक तरीका है. And creation of the fresh money it causes the prices to rise. Again जितना ज्यादा money supply increase होगा उतना ज्यादा inflation भी increase होती है. So this imposes an in a way inflation जो होता है हम उसको बोलते हैं एक तरीके से indirect tax है on the wider economy. So गवर्नमेंट इन अ वे दिस वाज द मेन रीजन. जब हम बात करते हैं कि जो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा था 7 consecutive क्वार्टर्स में, दिस वाज द मेन रीजन. एंड अभी जो ग्लोबल डेट इंक्रीज हो रही है, क्या ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है या नहीं? तो राइजिंग ग्लोबल डेट लेवल्स यूजुअली इट लीड्स टू कंसर्न्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ सच डेट. तो एक ये एरिया है. दिस इज पर्टिकुलरली सो इन केस ऑफ द गवर्नमेंट डेट व्हिच इज प्रोन टू राइज रैपिडली ड्यू टू रेकलेस बोरोविंग्स बाय पॉलिटिशियंस टू फंड द पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स. सो अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर गवर्नमेंट बोरोविंग्स इंक्रीज भी हो रही है, वो किस पर्पस के लिए अगेन बोरो किया जा रहा है, उसको कहाँ हम यूज कर रहे हैं उस पैसे को, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहता है समझना और उसको देखना. सो जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो सर्विसिंग दिस आउटस्टैंडिंग डेट ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि अगेन जो बोरोइंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है तो ये हमें नोट करना इंपॉर्टेंट है कि डिस्पाइट राइजिंग डेट लेवल्स ऑफ द लास्ट डेकेड, जो इंटरेस्ट था जो गवर्नमेंट को अगेन पे करना पड़ता है टू द लेंडर्स, लार्जली इट रिमेन्ड मैनेजेबल ड्यू टू एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट, पर्टिकुलरली वेस्टर्न इकोनॉमीज में. तो अगेन इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ आफ्टर द पैंडेमिक. तो उससे पहले अगेन जब हम एवरेज कैलकुलेट करते तो वो इतना हाई नहीं था एंड दे वर इन द मैनेजेबल टेरिटरी. So this is set to change now as a central bank they have again interest rate अब increase हो चुके हैं काफी हद तक, and अभी भी we can't say कि we have reached the maximum या आने वाले टाइम में ऐसा कोई अभी हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को हम कम करना या रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे. वेल इस टॉपिक में मुझे ऐसा लगता है कि द टर्म व्हिच हैज बीन यूज्ड रेकलेस बोरिंग बाय द पॉलिटिशियंस इज समहाउ नेगेटिव because politicians are not of any other territory. They are borrowing just for the socio-economic governance. तो मुझे ऐसा लगता है कि a large presence of informal economy which is not providing enough space for the tax buoyancy in the country, and private sector is also recklessly taking borrowing from the outside of the countries,
And there are a number of other reasons, like you have just mentioned, that the people are not um, getting that the people are not channelizing their money in the credit supply, and the credit supply um, rules and regulations are such that the more and more people are going outside and they are bringing money from there. So one point I really want to raise from you is that ऐसे कौन से चार एरिया हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए जिससे कि हमारी ग्लोबल डेब्ट जो हमारी दिक्कत आ रही है उसे खत्म किया जाए। फर्स्टली तो आपने अभी यहाँ पे बोला कि जो लोग अपनी सेविंग्स चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, तो लोग सेविंग्स चैनलाइज कर रहे हैं, मैंने ये पॉइंट बोला था, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, इंक्रीज सेविंग्स आर चैनलाइज्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। तो इसकी वजह से भी हमें बोरोविंग्स इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे अगेन हम डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि अगर बोरोविंग्स इंक्रीज हो रही है, डेट इंक्रीज हो रही है, तो वो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो जाते हैं या एक मेजर प्रॉब्लम बिल्डअप हो रही है। यहाँ पे इंक्रीज इन बोरोविंग इस वजह से भी हो सकती है कि लोगों की सेविंग्स रेट जो है, यहाँ ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे नहीं, सेविंग्स रेट इंक्रीज होने की वजह से भी जो पैसा चैनलाइज किया जाता है थ्रू द बैंकिंग नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स उसी पैसे को बोरो कर रहे हैं, तो इसीलिए बोरोविंग्स भी इंक्रीज हो सकती है। तो फर्स्टली आई वांट टू करेक्ट यू हेयर। एंड एक पॉइंट आपने रेज किया रिगार्डिंग द पॉलिटिशियंस कि वी कांट से कि वो एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट आप ये कहना चाह रहे हो कि वो भी जिस पर्पस के लिए पैसा बोरो करते हो अल्टीमेटली लोगों के वेलफेयर के लिए ही पैसा यूज किया जाता है, बट स्पेसिफिकली ड्यूरिंग इलेक्शंस हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स हैं, सपोज हम इंडिया में अगर एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो अगेन वहां पे भी जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलिस्ट मेजर्स। वहां पे वी आर सीइंग की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, तो थिंग्स दे हैव बिकम वर्सेंड इन अ वे। तो ये चीज भी हमें कंसिडरेशन में लेना इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है कि अगेन जो पैसा बोरो किया जा रहा है उसको अल्टीमेटली किस तरीके से हम स्पेंड कर रहे हैं। तो पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स में पैसे को स्पेंड करना इज नॉट द राइट वे, क्योंकि अगेन आपको उस पैसे को रीपे भी करना है। एंड एज पर एज आपने क्वेश्चन रेज किया लास्टली की सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो सिंस यहाँ पे अगेन हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो अगेन रिफॉर्म्स ऑफ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स दैट कैन हेल्प अस। एंड यहाँ पे अगेन आपने इस तरीके से सोच के क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल डेट इंक्रीज हो रही है तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, तो इसको आप उस पर्सपेक्टिव से ना देखो, क्योंकि वही पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जो रीजन है उसके पीछे इंक्रीज होने का वो अगर नेगेटिव होता तो ये हमारे लिए एक मेजर कंसर्न होता। सो अगेन इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर इस पैसे को जो बोरो करके इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसको कहाँ कहाँ चैनलाइज किया जा रहा है बाय इवन द एडवांस्ड इकोनॉमीज, क्योंकि हमने ये देखा है कि मेजर जो डेट इंक्रीज हुई है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज की इंक्रीज बोरोइंग की वजह से हुई है। तो अगर वहां पे स्लो डाउन हो रहा है, वी आर सीइंग कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन में स्पेसिफिकली यूएसए में और इवन यूरोप की अगर हम बात करें, तो उस पैसे के थ्रू अगर वो अपनी इकोनॉमी को फिर से वी कैन से कि स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या जो जीडीपी ग्रोथ है वो उस बोरोइंग की वजह से इंक्रीज हो सकती है, तो उस पैसे को रीपे करने में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ऑल्सो आपने अगेन अनदर थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट इज कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो बोरोइंग कॉस्ट है, दैट ऑल्सो रिमेन्स विद इन द मैनेजेबल टेरिटरी। तो अगेन ये भी एक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी व्हेन वी टॉक अबाउट रीपेइंग द डेट। तो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा इंक्रीज होने के बावजूद भी अगर वी आर सेइंग कि इट रिमेन्स इन द मैनेजेबल टेरिटरी, तो आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू क्रिएट मच प्रॉब्लम इन फ्यूचर। प्रॉब्लम तभी होगी जब वी वुड बी सीइंग डिफॉल्ट्स। सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू सी दिस टॉपिक राइट नाउ। आई होप आई एम क्लियर टू यू। Yeah, sure. ओके, so coming to the business page, यहाँ पे again we are having a proper like semiconductor mission, तो इसको हम कैसे promote कर रहे हैं इंडिया में, we are coming up with different projects and investments. So Micron plant for which construction is started, this is one of the new developments around this, and यहाँ पे हम यही focus कर रहे हैं, we are developing the our domestic capabilities so that we are not dependent upon importing it from countries.
अगेन क्योंकि ये भी एक रिस्की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, वी आर डिपेंडेंट, इफ वी आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन दी imports of semiconductors, क्योंकि important role play करते हैं when we talk about electronics manufacturing में, when we talk about automobile manufacturing, so that supply disruption हमें ना face करना पड़े. That's why we are trying and we are pushing कि हम domestic supply, domestic production increase कर पाएं. Okay, so now we are taking a financial express. So again, semiconductors के around the chip stacked in India's favor after Micron. 2 more chip projects, they would be inaugurated soon, and Micron chip facility 2024 के end तक it would be functional. Then so 8% growth की अगर हम बात करें इंडिया के लिए, तो it is imaginable goal for India, but it needs पॉलिसी सपोर्ट. तो इमेजिनेबल है, अब कैसे हम उसको एक्चुअली बेसिकली एक्चुअलाइज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो बट दिस वुड रिक्वायर चेंजेस इन करंट पॉलिसी. सो अमिड द कंसर्न्स ऑफ द फॉल इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ कैपेसिटी in recent years, one of the former US Treasury Secretary and he's been economist also, he said कि 8% growth imaginable है इंडिया के लिए, but इसको again कैसे हम उसको अचीव करेंगे वो हमारे लिए सोचना, ग्रोथ पाथ हमारे लिए सोचना इम्पोर्टेंट है. And apart from this, stating कि an 8-fold expansion of Indian economy by 2050 it could transform the lives of hundreds of millions of people. And he said कि I think it is something to target as India defines its greatness in the next century. So again यहाँ पे when you talk about role of India in the Asian सेंचुरी, तो अगेन इंडिया का रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वी कांट इवन इमेजिन एशियन सेंचुरी विदाउट इंडिया. सो दिस इज द एरिया एंड वी कैन थिंक अबाउट कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगेन इंडिया का रोल इतना इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि दैट एरिया वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट इंडियाज प्रेजेंस एंड इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशंस. सो दिस वी कैन थिंक अबाउट स्पेसिफिकली if we talk about in terms of the services sector, that is again very important. Apart from this, manufacturing sector में we have, when we have talking about economic growth capacity, so capacity exists when we talk about growth in India's manufacturing sector, so we can focus over there. And just strategic, I think the most important sector is the MSME today. MSMEs, yes, definitely it is very important sector specifically for India. मैं global सेंस में मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्लोबली भी वो कैसे इंपॉर्टेंट है. सेमीकंडक्टर्स की अभी जैसे हमने बात करी, तो वहां पे अगेन अगर हम इतनी कैपेसिटी डेवलप कर पाए कि हम उसको आगे जाके एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, तो अगेन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस इंडिया स्पेसिफिकली ऑल्सो, एज वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन इंटीग्रेट इंडिया इन द ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन. तो देयर इन ऑल्सो this area can help us. And apart from this, we can think about other sectors also. If you have any other sector, you can suggest. I think we have logistics sector, then we have the robotics, machine learning, all these, then the education sector also, medicine sector. So all these sectors are, I mean, these time prominently working in this regard. Okay. So even drafting laws in a simple manner is important. कि laws ऐसे ड्राफ्ट किए जाने चाहिए या लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए कि अ कॉमन मैन इज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड कि लॉ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं या किस चीज के बारे में लॉ है, क्या उसके प्रोविजंस हैं. सो दैट इज अगेन you can say a new area which we should explore, yeah, where we have started focusing upon. So lot to do and lot of time for it exists. So Prime Minister flags concern over the cyber terrorism and money laundering. So right now जो again हमारे पास laws भी हैं, prevention of money laundering act है, उसमें क्या changes हम कर सकते हैं to address the newly emergent challenges specifically in this area. And again, cyber terrorism, it comes with the positives which are associated with the growth of modern technology. So इनको address करना at the same time important है.
हेरन ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रोल है लॉयर्स का, it has evolved to address global legal challenges. Again, this has been highlighted by our Chief Justice of India. So, रोल ऑफ लॉयर्स कैसे इवॉल्व हुआ है वो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड क्या ग्लोबल लीगल चैलेंजेस हैं जो वो हमें हेल्प कर रहे हैं इन एड्रेसिंग देम. So in an era which is characterized by ever increasing globalization, जो role of lawyers it is evolved to address myriad global legal challenges. So in areas like cybersecurity, data privacy, intellectual property, lawyers, they also bear significant commercial responsibility also, which helps in driving economic growth by helping the clients and the governments enhance their business efficiency, cross-border operations. So बहुत सारे keywords यहाँ use किए गए हैं, and these are certain areas जहाँ पे role of lawyers evolve और ज़्यादा important हुआ है. So when we talk about holistic development in the state of Arunachal Pradesh, तो specifically border areas के around development का हमारा क्या plan है, क्या schemes we are having and which are operating also. So again, we are focusing upon strengthening the connectivity, boosting economic growth over there, and again वहाँ पे how we can even prevent the distress migration to we can say कि North Indian states, even for education and when it comes to employment opportunities also. So एक हम connectivity पे focus कर रहे हैं, tourism पे भी we are also focusing upon health और educational facilities को कैसे और accessible, affordable हम बना सकते हैं, environment friendly projects जो हम again start कर रहे हैं, airports are being developed and air connectivity again हम उस पे focus कर रहे हैं, and even from the perspective of the logistical sector, so connectivity हमें यहाँ पे और ज़्यादा help कर सकती है. सो टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, सो यहाँ पे भी हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से ऐसे न्यू एरियाज हैं जो और एक्सप्लोर और एक्सपैंड हो सकते हैं स्पेसिफिकली टूरिज्म सेक्टर के पर्सपेक्टिव से. सो टूरिज्म सेक्टर का भी ग्रोथ पोटेंशियल हमें समझना है. सो टूरिज्म सेक्टर इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड $250 billion टू द कंट्रीज जीडीपी बाय 2030. यहाँ से अगेन डेफिनेटली और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएंगी, एंड यहाँ से डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी जो हम अर्न कर सकते हैं दैट आर एट द ट्यून ऑफ $56 billion. So these are the figures as per Invest India. So again you can use them at relevant places. So tourism for all, again यहाँ पे आप सिर्फ इसको अब डिफरेंट डिमेंशंस क्या हो सकते हैं, हेल्थ टूरिज्म के बारे में भी आप सोच सकते हो, ट्रैवल एंड टूर मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रेल इंफॉर्मेशन. अगेन टूरिज्म को हम कैसे मेक इट मोर एक्सेसिबल फॉर दी persons with disabilities, again inclusive tourism environment कैसे हम create कर सकते हैं. यहाँ पे again multiple जो schemes है, they need to be functioning, they need to be implemented in a synergized manner. And India is inching towards an all-inclusive approach to boost the tourism and create a friendly environment in tourist destinations. So helping hand 1 billion people living with some form of disability across the world, which is again 15% of the total population as per WHO. 2.1% percentage of the population in India is living with some form of disability, 2011 के figures के हिसाब से. So again, we can leverage even their contributions also when it comes to growth of tourism sector. So that's all in this part, and we'll take up the next newspaper in part 2.